Assalam-o-Alaikum friends, welcome to my YouTube channel. This is lecture number 6 and part 6. In this lecture, we will learn about border, margin, padding. Okay, border, margin and padding. Many people are confused about the topic margin, bottom, padding, but and they usually mix them. In this video, we will clear our concept, and after this video, you can easily differentiate the concept margin, padding and border. ठीक है ओके फर्स्ट इज मार्जिन मार्जिन क्या होती है जी मार्जिन इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर ओके मार्जिन इज एक्चुअली यूज्ड एक एलिमेंट्स के अराउंड स्पेस को क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू एलिमेंट्स ए एंड बी एंड इफ आई वांट टू चेंज द एंड इफ आई वांट टू जो है कि एक दो एलिमेंट्स के जो है between एक space create हो then I will do what I will change the margin of element A and B okay and we can change the margin of any element through different properties like margin top right bottom and left ठीक है and each margin have the property have the following value auto length percent inherit okay we can set the margin in pixel pt centimeter auto means that the browser calculates the margin percent means specify a margin is percentage of the width of the containing element okay padding padding are used to create space around elements margin is also used to create space around elements and padding is also used to create space around element but the difference is what it lies outside of the defined border and padding lies inside of any defined border okay and same the padding we can also set the padding of any elements to different values properties padding top padding right padding bottom and left okay border border itself tell us its concept border is what everyone knows properties allow you to specify the style width and color of an element borders we can set border of an element through different styles dotted dashed solid double and many styles are available for setting the border of any element okay margin versus padding up you can easily differentiate the concept margin and padding let's see again in this picture for example margin first margin for example this is element a and this is element b अब ये दोनों एलिमेंट्स है if I want to change the margin of element b up for creating this distance between the elements okay up in this figure clearly show that this picture and this picture has a padding this picture has a sorry margin this picture has a left margin and this picture has a right margin okay this green जो है एरोस शो मुझे करवा रही है क्या मार्जिन यहाँ पे सेट हुआ है ओके बिकॉज ग्रीन जो बॉक्स है टेल अस दैट द बॉर्डर ऑफ एनी कंटेंट एनी एलिमेंट और दिस जो है बॉक्स टेल अस द बॉर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इट्स मीन दैट द दिस इज एलिमेंट ए एंड दिस इज एलिमेंट बी और द जो स्पेस जो है बिटवीन दीज एलिमेंट्स जो है वो क्या बता रही है हमें मार्जिन सेट हुआ है पैडिंग पैडिंग जो है वो लाइज बिटवीन दी border and content look at this padding is placed padding refers to the space between an element and a content margin जो है outside of an element किसी भी element के outside होता है outside we can say हम यूं भी कह सकते हैं कि दो elements के जो है वो एक distance create करने के लिए margin यूज होती है और हम but it lies outside the border okay it lies inside the border this greenish tell us that this is the content and the other box tell us that this is the border and greeny जो blue arrows हैं वो क्या बता रहे हैं padding okay okay the conclusion is this के margin और padding margin क्या outside the border padding क्या inside the border but outside the content
ओके दिस जो है वो फिगर क्लियर will clear your concept. Okay, this is a content. Okay, this is the content, this is the padding of the content, padding, this is the border of the content, and this is the margin of the content. Content, content के बाद क्या होती है padding, padding के बाद क्या होती है border, border के बाद margin. Border lies between padding and margin. Margins जो है वो lies outside the border. Padding lies inside the border but outside the content. Okay. For example, in subline editor, I'm using the p tag. Okay, in which मैं जो है वो कोई भी text enter कर सकती हूँ. अब जब मैं p tag को यूज करती हूँ, when I'm using the p tag, उसके बाद जो है वो by default क्या सेटिंग हो जाता है, एक ब्लू कलर का. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जाम्पल. ओके, अब सबसे पहले एक जो है वो ब्राउन कलर का एक पैडिंग सेट हो जाती है, उसके बाद ब्लैक बॉर्डर सेट हो जाते हैं, उसके बाद मार्जिन सेट हो जाती है. अब ये मुझे बताता है कि एलिमेंट को मैंने डिस्प्ले करवा दिया. ओके, अब विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट हम पीछे यही पढ़ते आ रहे हैं जी. एक एलिमेंट की पैडिंग, लेफ्ट मार्जिन होता है, लेफ्ट राइट टॉप, बॉर्डर होता है लेफ्ट. अब इसमें से जो है वो विड्थ एंड हाइट हम कैसे सेट कर सकते हैं? क्या एक एलिमेंट के अंदर कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन को जो है सबको प्लस करके ही एक विड्थ जो है कैलकुलेट होती है और सबको प्लस करके एक हाइट कैलकुलेट होती है? लेट्स से when we specify the width and height properties of an element with CSS cascading style sheet, we are just setting the width and height of the content area. To know the full size of the element, we must also adding the padding, border, margin. देखिए, टोटल एलिमेंट विड्थ, टोटल एक एलिमेंट की विड्थ कब कैलकुलेट होती है? जब उसके अंदर इंक्लूड होते हैं विड्थ, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन. विड्थ के अंदर जो है हम लोग क्या कह सकते हैं? इंक्लूड्स लेफ्ट एंड राइट थिंग्स. ओके, हाइट्स के अंदर इंक्लूड टॉप एंड बॉटम थिंग्स आर इंक्लूडेड इन हाइट, एंड लेफ्ट एंड राइट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन विड्थ. So let's move toward some practical. We will clear our concept through some practical. For example, if we have two elements picture, I'm using the image tag and source of the picture is desktop, extension is PNG. I have two pictures. Okay, first सबसे पहले जो है आई एम सेटिंग दी इमेज जो है border style. Okay, border style of image, so that you can easily differentiate the concept. Okay, get dotted. Okay, in these pictures, in these both of these pictures you have, this is the border of this picture and this is the border of the second picture. Picture जो है इसके अंदर inside the picture show that this is the content. Okay, and content and the border जो है dotted border के जो है वो between क्या lie करे? Padding. And in this picture the padding is बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है? जीरो सेट हुई हुई है, और मार्जिन आउटसाइड द बॉर्डर लाए हुए है, और वो भी आई थिंक सो नहीं, जीरो ही सेट हुआ हुआ है. ओके, और सेम जो है इस पिक्चर्स के साथ भी यही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है. नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी आर जस्ट चेंजिंग द मार्जिन एंड मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट फॉर एग्जांपल 50%. now both pictures have left margin and 50 pixels. Okay, 50 pixels जो है इनकी लेफ्ट मार्जिन सेट हुई हुई है. नाउ वी कैन सी इजीली. ओके, नाउ पैडिंग, वी आर चेंजिंग द पैडिंग, और पैडिंग क्या है? फॉर एग्जांपल 50. दिस पैडिंग इंक्लूड लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग,
top padding, bottom padding. If we are, if you want to change the left padding, so you can easily typing type. ये देखिए left padding भी आ गया. Okay, so there is no option issue. Okay, देखिए. Okay, now you can easily clear your concept. You this picture क्या बता रही है हमें? Content. This is the border. Okay, ये जो हमारे पास है ना, डॉटेड लाइन क्या बता रही है? बॉर्डर. कंटेंट और बॉर्डर के सेंटर में हमारे पास पैडिंग है. पैडिंग के आउटसाइड हमारे, सॉरी, बॉर्डर के आउटसाइड हमारे पास क्या है? मार्जिन. इन दो पिक्चर्स के सेंटर में एक स्पेस है. इस पिक्चर, सॉरी, इस बॉर्डर के जो है वो लेफ्ट में भी स्पेस है, राइट में भी स्पेस है. इट्स मीन दैट के मार्जिन चेंज हुआ है. सेम एज इट इज इस पिक्चर्स के साथ भी यही है कि यहाँ पे भी यही फंक्शंस परफॉर्म हो रही हैं वो जो यहाँ पे हो रही हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर.